Hello students, how are you? I hope you all are well. Students, today we will learn chapter number 11 and the chapter name is Visualizing Solid Shapes. Visualizing solid shapes. Now class, let's start the chapter introduction. In our daily lives class, we come across several objects. Class बहुत सारे, several means many objects के, okay, that have different shapes. Class अलग अलग shapes होती है. All of the objects have some dimensions. Class सबके कुछ कुछ dimensions होते हैं. In this chapter, we shall learn about the one-dimensional, two-dimensional, and three-dimensional figures. We shall also learn to represent the 3D or 2D figures. 1D figures class, the figures that are defined by only one dimension, called class 1D figure. The figures have no width and thickness. For example, a line segment and a ray. Line segment and ray. तो क्लास इनके पास ना तो कोई width होती है ना ही thickness होती है. Now 2D figures that have some length and breadth are called two-dimensional figures. These figures have no thickness. The 2D figures are also known as the plane figures, as they can be represented on a plane. For example, rectangle, square, triangles and etc. Class ये क्या है हमारे 2D figures हैं. Now class 3D figures, the figures that have class length, breadth as well as thickness. लेंथ भी होती है क्लास, ब्रेथ भी होती है, उनकी थिकनेस भी होती है. वो होती है हमारी थी कौन सी होती है क्लास? 3D figures होती हैं. These figures are also known as solid figures. The solid figures have fixed shape, size and occupy fixed space. For example, class cube, cuboid, sphere, prism and etc. Exercise 11.1. Question number 1. Draw two objects that have a shape of cone mounted over a cylinder. Class, yes, cone mounted over a cylinder. अंडरस्टैंड क्लास. यहाँ पर क्लास हम एक को भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस. सिमिलरली अब क्लास सी, कम ऑन एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग क्लास. यस क्लास, यहाँ पर हमें शेप दी हुई है, ऑब्जेक्ट टाइप्स ऑफ शेप्स. हमें क्या क्लास क्या करना है? मैच करना है. तो क्लास रेक्टेंगल इज 2-dimensional शेप. नाउ क्यूबॉइड इज 3-dimensional शेप. अंडरस्टैंड क्लास. नाउ अगेन क्यूब 3, सर्कल क्लास 1-dimensional होता है सर्कल के पास. Understand rest of the part, do yourself. Come on, polyhedron class. The 3-dimensional solid shapes composed of polygons is called a polyhedron. Let us define some terms associated with a polyhedron. Faces class, called class, जो forming class polyhedron के face होते हैं is called its faces. Edges, the line segment where the faces of a polyhedron intersect are called the edges. Vertices, the corners where the edges of a polyhedron intersect class वो होती है उसकी vertices. Now some common examples of polyhedrons are given below, where F is for faces, E for edges and F for faces. Now cube class, F class faces 6 होते हैं, edges 12 होते हैं और vertices 8 होते हैं. Similarly class cuboid में faces 6 होते हैं, edges 12 होती है और vertices 8 होते हैं. Now 6 12 8 6 12 8 क्यूब और क्यूबॉइड का क्लास सेम होता है. अब रेगुलर पॉलीहाइड्रोन, द फेसेस ऑफ पॉलीहाइड्रोन आर मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर regular polygons and some numbers of faces. At each vertex a polyhedron is called regular polyhedron. For example, a cube class C, regular polyhedron. Note class ये नहीं है. अब again class convex polyhedron. If any polyhedron, the line segment joining any two points on its surface lies entirely inside or on the polyhedron, then it's called a convex polyhedron. Class cube, cuboid, pyramid and prism are the example of convex polyhedrons class. Now class prism, a polyhedron whose side faces are parallel polygons and base are congruent. Class वो congruent है तो क्लास वो क्या कहेंगे हम उसको? प्रिज्म. एसोसिएटेड विद द प्रिज्म बेस होता है, उसका हाइट होता है, एक्सिस होता है, लेंथ, लेटरल फेसेस और लेटरल एजेस. क्लास सी यहाँ पर दी हुई है. स्टैंड क्लास, जो स्टैंड करता है वो क्या होता है? उसका प्रिज्म. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एंड्स द प्रिज्म हाइट होता है. द स्ट्रेट क्लास ये जो लाइन होती है वो क्या हो गया? एक्सिस. लेंथ हो गई उसकी एंड लेटरल फेसेस हो गए एंड लेटरल एजेस हो गई. क्लास पिरामिड्स, a pyramid is a polyhedron whose base is polygon and whose sides faces
are triangles having a common vertex. Let's define some terms associated with the pyramid. Vertex है class, height axis है, lateral edges है, lateral faces है, as the prism. Okay class. Palatonic solids. A palatonic solid is the polyhedron. This is the 5 palatonic solids class. 5 होते हैं. Tetrahedron, hexa, octa, isohedron, dodecahedron class. Okay, class is called triangular pyramid. Cube, 4 equilateral triangles, 5, 3 pentagons. Euler's formula class. Euler formula होता है states that the number of faces, the number of vertices and the number of edges of a simple convex polyhedron maintain a relationship. Face plus vertices, edge plus 2. Tetra, hexa, octa class ये सब दिए हुए हैं हमारे पास. 4, 6, 8, 20, 12. 4, 8, 6, 12, 20. Understand class? Up 3D shapes class from different positions. A net of a 3D shapes is like a skeleton outline in 2D which when fully regains the 3D shapes. This tools help us visualizing 3D shapes more clearly. Class इसके हम जो हमारी 2D और 3D shapes होती हैं तो हम सफाई से देख सकते हैं. See, net of a cube, net of a cube, net of a cube. Now cylinder, triangular, and net of a triangular piece, prism. Using Euler formula, find the missing number class. Euler formula हमने पढ़ा था अभी like this. That is f plus v e plus 2. f plus v e plus 2. तो क्लास फेस है हमारे पास 6 वर्टिसेस और एजेस है हमारे पास 12. तो क्लास हमें क्या बताना है? वर्टिसेस बताने हैं. तो क्लास ये हो गया 14 minus 6, क्लास हो गया 8. Understand? Rest of the parts do yourself. Come on question number 2. Draw the nets of the following solids. क्लास क्यूब के हमने नोट नेट्स बनाए थे यहाँ पर. You can draw like this. Understand? Now rest of the part do yourself. Come on question number 3. Name the solid shapes in the following nested solids. Yes class. यहाँ पर ये क्या है? Cylinder. Yes class. हाँ cylinder and नीचे वाला क्लास क्या है? क्यूबॉइड. क्लास ये क्या है हमारे पास? 2 कोन्स. ये क्या है हमारे पास? 2 कोन्स. इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है 2 कोन्स को लाइक दिस. 2 कोन्स. Rest of the parts do yourself. Come on question number 4. Which solids do the following nets represent? क्लास ये क्या है? क्लास हमारे पास स्क्वायर प्रिज्म है यहाँ पर. क्लास स्क्वायर प्रिज्म. Rest of the parts do yourself. Now class your chapter is completed. Prepare it very well and we will meet next class.